हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको आफ्टर ट्रेवल बाई फ्रांसिस बेकन 1561 to 1626 टेक्स्ट। ट्रेवल इन द यंगर sort is a part of education, in the elder a part of experience. He that travelleth into a country before he hath some entrance into the language goeth to school and not to travel. That young man travel under some tutor or grave servant. I allow well, so that he be such a one that hath the language, and hath not been in the country before, whereby he may be able to tell them what things are worthy to be seen in the country where they go, what acquaintance they are to seek, what experience or discipline the place ill that for else young men shall go hooded and look abroad little. It is a strange thing that in sea voyage, where there is nothing to be seen but sky and sea, men should make dairies, but in land travel, wherein so much is to be observed, for the most part they omit it, as if chance were fitter to be registered than observation. Let dairies therefore he brought in use. Summary of the essay. Traveling in a foreign country benefits both the young and the old. For the young, traveling is a sort of education. For the old, it is an addition to their experience of life. Before visiting a foreign country, one should learn in advance the language of that country to gain maximum benefit from the visit. It is also advisable to take a guide who knows the language and is acquainted with that country. It is strange that people keep record of the sea voyage, but they do not take pains to keep a record of the land travel where they go for the specific purpose of seeing people and places. Therefore, diaries should be maintained during foreign travel. हिंदी। विदेश में यात्रा करना युवकों तथा प्रौढ़ों दोनों के लिए लाभप्रद होती है। युवाओं के लिए एक शिक्षा होती है, प्रौढ़ों के लिए जीवन के अनुभव में वृद्धि है। अपनी यात्रा का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए विदेश यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व यात्री को पहले ही उस देश की भाषा सीख लेनी चाहिए। एक पथ प्रदर्शक लेना भी उचित है जो उस देश की भाषा को जानता हो तथा उस देश से परिचित हो। यह आश्चर्यजनक है कि लोग समुद्री यात्रा का लेखा जोखा रखते हैं, परंतु स्थल यात्रा का लेखा जोखा रखने का कष्ट नहीं उठाते तथा जहां वे लोगों को तथा स्थानों को देखने के लिए जाते हैं, तब विदेश यात्रा के दौरान डायरी का प्रयोग करना चाहिए। वर्ड मीनिंग। ट्रैवल मीन्स फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा। इन द यंगर शॉर्ट मीन्स फॉर द यंग पीपल, युवकों के लिए। एक्सपीरियंस मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन का अनुभव। एंट्रेंस इनटू मीन्स टू गेन नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति। गो टू स्कूल मीन्स फॉरेन ट्रैवल इज लाइक गोइंग टू स्कूल टू लर्न सो मैनी थिंग्स, विदेश यात्रा बहुत सी बातें सीखने के लिए स्कूल जाने के समान है। ग्रेव मीन्स सीरियस, माइंडेड, गंभीर। आई अलाउ मीन्स आई अप्रूव। हैथ द लैंग्वेज, लर्न द लैंग्वेज। इल्डेट मीन्स ऑफर्स, प्रस्तुत करता है। गो हुडेड मीन्स गो विथ क्लोज्ड आइज लाइक हॉक्स। यूज्ड फॉर हंटिंग, शिकार में प्रयोग आने वाले बाजों की तरह आंखों पर पट्टी बांधे हुए। लुक अब्रॉड लिटिल मीन्स लुक वेरी लिटिल इन द फॉरेन लैंड। मेक डायरीज मीन्स कीप रिकॉर्ड ऑफ इवेंट इन ए डायरी। फॉर द मोस्ट पार्ट मीन्स मोस्टली। ओमिट मीन्स निग्लेक्ट। चांस मीन्स चांस हैपनिंग लाइक स्टॉर्म, रेन, etc. ड्यूरिंग सी जर्नी, समुद्री यात्रा के दौरान तूफान, बारिश आदि जैसी आकस्मिक घटनाएं। फिटर मीन्स मोर सूटेबल। रजिस्टर्ड मीन्स रिकॉर्डेड। टेक्स्ट। द थिंग टू बी सीन एंड ऑब्जर्व्ड आर द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस, स्पेशली when they give audience to ambassador, the courts of justice while they sit and hear causes and show of consistories, ecclesiastical
ecclesiastic, the churches and monasteries with the monuments which are therein extant, the walls and fortification of cities and towns, and so the havens of harbor, antiquities and ruins, libraries, college, disputations and lectures, where any are shipping and navies, houses and gardens of state and pleasure near great cities, arm, armories, arsenals, magazines, exchange, worship, where houses, exercise of horsemanship, fencing, training of soldier, and the like comedies, such where unto the better sort of person do resort treasuries of jewels and robes, cabinet and rarities, and to conclude whatsoever is memorable in the places where they go, after all which the tutors or servant ought to make diligent inquiry, as for triumphs, masque, feast, weddings, funerals, capitals, executions, and such shows. Men need not be put in mind of them, yet are they not to be neglected. If you will have a young man to put his travel into a little room and in short time to gather much, this you must do first, as was said, he must have some entrance into the language before he goes. Then he must have such a servant or tutor as knoweth the country, as was likewise said. Let him carry with him also some card or book describing the country where he travelled, which will be a good key to his inquiry. Let him keep also a diary. Let him not stay long in one city or town, more or less as the place deserveth, but not long. Nay, when he stays in one city or town, let him change his lodging from one end part of the town of another, which is the great adamant of acquaintance. Let him sequester himself from the company of his countrymen, men, and died in such places where there is good company of the nation where he travels. Let him upon his remove from one place to another procure recommendation to some person of quality residing in the place whither he removed, that he may use his favor in those things he desire to see or know. Thus he may average his travel with much profit. Summary of the essay. It is advisable that a visitor should visit all places of importance and interest, such as the courts of king and princes, the law court, religious institutions, historical buildings, educational and military places, places of trade and commerce, games and sorts of drama, and the like. One should also have charts and maps of the foreign lands to visit, because he will gain from them. For maximum advantage, he should also learn the language of the foreign land. He should have a tutor to learn that language, or a guide who had visited the land before. Then he should not stay at one place for a long time, and in that place he should exchange his lodgings frequently. He should also mix with local people and avoided the company of compatriots. He should also try to get recommendation or some important person
who shall prove to be of great help and गाइडेंस एट द प्लेसेस ऑफ द विजिट। हिंदी, यह उचित है कि यात्री को महत्व तथा रुचि के सारे स्थानों पर जाना चाहिए, जैसे कि राजाओं और राजकुमारों के दरबार, न्यायालय, धार्मिक संस्थान, ऐतिहासिक भवन, शैक्षिक तथा सेना संबंधी स्थान, व्यापार संबंधी, खेलकूद इत्यादि संबंधी स्थान। विदेशों के मानचित्र तथा सारणी भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी लाभ मिलता है। अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उस देश की भाषा सीख लेनी चाहिए। भाषा सीखने के लिए उसे एक प्रशिक्षक रखना चाहिए अथवा एक पथ प्रदर्शक जो पहले उस देश की यात्रा कर चुका हो। उसे एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरना चाहिए और उस स्थान पर भी उसे अपने ठहरने का स्थान बदलते रहना चाहिए। उसे स्थानीय लोगों से घुलना मिलना चाहिए तथा अपने देश के लोगों से मिलने से बचना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण लोगों के लिए परिचय प्राप्त कर लेने चाहिए, क्योंकि उनसे उसे अपनी विदेश यात्रा में काफ़ी सहायता तथा पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। वर्ड मीनिंग, कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस मीन्स रॉयल कोर्ट, शाही दरबार। गिव ऑडियंस मीन्स मीट पीपल। कंसिस्टोरीज एक्लेसिस्टिक मीन्स असेंबलीज ऑफ चर्च डिग्निटरीज, चर्च के अधिकारियों की सभाएं। मोनूमेंट्स मीन्स म्यूजियम, अजायब घर। एक्सटेंट मीन्स स्टिल एक्जिस्टेंस, अभी तक उपलब्ध। फोर्टिफिकेशन मीन्स सेफ्टी मीजर, सुरक्षा के उपाय। हेवेंस मीन्स सिक्योर प्लेसेस ऑन द सी, जहाज के लिए समुद्र में सुरक्षित स्थान। एंटीक्विटीज मीन्स ओल्ड एंड एंशियंट स्ट्रक्चर्स, प्राचीन इमारतें। डिस्पुटेशन मीन्स स्कॉलरली डिबेट्स, हाउस एंड गार्डन्स ऑफ स्टेट, रॉयल पैलेसेस एंड पार्क्स। एक्सचेंजेज मीन्स स्टॉक एक्सचेंज। वर्सेस मीन्स स्टॉक एक्सचेंज, वेयर हाउस, स्टोर हाउसेस। कॉमेडीज मीन्स कॉमिक परफॉर्मेंस। रॉफ्स मीन्स रॉयल ड्रेसेस। कैबिनेट मीन्स कप बोर्ड्स। डिलिजेंट इंक्वायरी मीन्स डेलिब्रेट एफर्ट टू नो मोर, अधिक जानने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयत्न। ट्रम्प मीन्स पब्लिक शोज। मार्क्स मीन्स मास्क्ड डांसेस, नकाब लगाकर किए गए नृत्य। ए लिटिल रूम मीन्स लिमिटेड एरिया, सीमित स्थान। एंट्रेंस इनटू द लैंग्वेज मीन्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। कार्ड मीन्स चार्ट। बुक मीन्स गाइड बुक। की मीन्स ए हेल्प बुक ऑफ गाइड। एडामेंट मीन्स मैग्नेट, चुंबकीय पत्थर। सीक्वेस्टर मीन्स कीप अवे, अलग रखना। डाइट मीन्स मील, भोजन। एवरेज मीन्स शॉर्टर, छोटा करना। टेक्स्ट, एज फॉर द acquaintance which is to be sought in travel, that which is most of all profitable is acquaintance with the secretaries and employed men of ambassador, for so in travelling in one country he shall suck the experience of many. Let him also see and visit eminent persons in all kinds which are of great name abroad, that he may be able to feel how the life agreeth with the fame. For quarrels they are with care and discretion to be avoided. They are commonly for mistresses, health, place, and words. And let a man beware how he kept company with choleric and quarrelsome person, for they will engage him into their own quarrels. When a traveller returneth home, let him not leave the countries where he hath travelled led altogether behind him, but maintain a correspondence by letters with those of his acquaintance which are of most worth, and let his travel appear rather in his discourse than in his apparel of or gesture. And in his discourse let him be rather advised in his answer than forward to tell stories, and let it appear that he doth not change his country manners for those of foreign parts, but only prick in some flowers of that he hath
learned abroad into the custom of his own country. Summary of the explanation essay. For this purpose, the acquaintance of the secretaries and the employee of the ambassador is quite useful. By this, the traveler learns about several countries by visiting only one country. In the same way, he should meet the influential person of that land. He should avoid the company of quarrelsome people. After returning home, the traveler should not break his contact with that country. He should keep us correspondence with the important person of that land. He should also not make a show of foreign dress, foreign language, or any other thing which speaks about his foreign visit. He should not try to replace his local manners with foreign manners, but incorporate some of the better parts of his behavior. हिंदी। इस कार्य के लिए सचिवों तथा राजदूतों के कर्मचारियों के से जान पहचान काफ़ी उपयोगी होती है। इससे यात्री एक देश की यात्रा करके अनेक देशों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार उसे इस देश के प्रभावशाली लोगों से मिलना चाहिए। झगड़ालू लोगों के साथ संग साथ से बचना चाहिए। अपने भ्रमण से लौटने के पश्चात उसे उस देश के प्रमुख लोगों से पत्र व्यवहार जारी रखना चाहिए। उसे विदेशी वेशभूषा, विदेशी भाषा या ऐसी कोई भी चीज़ जो उसके विदेश भ्रमण के बारे में बताती है का दिखावा नहीं करना चाहिए। उसे स्थानीय तौर तरीकों के स्थान पर विदेशी तौर तरीके नहीं अपनाने चाहिए। हालांकि अपने व्यवहार में उनकी अच्छी बातों का समावेश होता है। वर्ड मीनिंग। इमिनेंट मीन्स रेपुटेड पर्सन, ख्याति प्राप्त लोग। ऑफ ग्रेट नेम एब्रॉड मीन्स रेपुटेशन इन फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में ख्याति। द लाइफ एग्रीड विथ फेम मीन्स द लाइफ ऑफ रेपुटेड पर्सन करेस्पॉन्डेंस विथ हिज रेपुटेशन, ख्याति प्राप्त व्यक्ति का जीवन उसकी ख्याति से मेल खाता है। डिस्क्रिएशन मीन्स विजडम, बुद्धिमानी। हेल्थ मीन्स टोस्ट, मदिरापान में के अवसर। प्लेसेस एंड वर्ड्स मीन्स स्टेटस एंड रूड टॉक, स्तर तथा अशिष्ट बातें। कॉलरिक मीन्स ऑफ इरिटेबल नेचर, भटकने वाले स्वभाव का। अपील्स अप्रल मीन्स ड्रेस रेदर एडवाइस। थॉटफुल मीन्स थॉटफुल। फॉरवर्ड मीन्स ईगोर, आतुर। ट्रिक इन मीन्स इंक्लूड, शामिल करना। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।